Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to Testbook Regulatory Bodies. In this particular session, we are going to discuss about the functions of management. Okay, so I hope I'm clearly audible and visible to all of you, right? So everyone, quickly join in and do mention into the comment section if everything is fine from my side, so we can start our today's discussion, right? In our previous session, where we generally talk about management thoughts, that is again very important one. So, similarly, today itself, we will talk about the major functions of management, or that is also known as management process, which include planning, organizing, staffing, directing, and controlling, right? So just after the theoretical aspect, we will also practice question based on the same topic, right? So हर आपका सैटरडे को लाइक एवरी सैटरडे विल हैव दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके एरियाज हैं उनको आपका कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज क्वेश्चंस, ठीक है. सो वी विल प्रैक्टिस द बोथ, राइट. So the first thing, I hope everybody knows about the management thing, right? So what is management? ठीक है. So management की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, so like it is part of like in every organization we do have some that we do follow that process, ठीक है, which is like let's say अगर आप किसी भी business में, ठीक है, so first we generally decide our broader goals and objectives. That is generally part of planning. Then we do this organizing things, who will responsible for what, or the overall allocation of resources. Then we have the next stage is staffing. Will be required some people who will handle those particular role and responsibilities. So right person at right job. Then we have directing, where where we generally study about the leadership, motivation, personality, perception, and all these kind of things. And the final one is control. Control is directly linked with your planning thing. So degree of control is generally decided by the plan itself, right? So management is a process of planning, decision making, and organizing, leading, motivating, and controlling the human resources. Basically four major resources. One is human, another one is financials, then we have physical, and then final one is information resources, or which is also known as technological things, okay, of an organization to reach its goal efficiently and effectively, right? So to achieve this particular thing, we have this entire process, ठीक है. तो ये process आपका जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. So which start with like अगर आप कभी भी मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आपके 5 स्टेजेस आपके जो रहेंगे, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग. Basically the goal setting, the objective setting, ठीक है, what to produce, how to produce, whom to produce, objective, goals, mission, vision of that particular organization, ठीक है, they are part of this. Then we have organizing, ठीक है, आपका allocation of resources. Then staffing, selecting right person at right job. Then directing, so basically it is a leadership job, ठीक है. सो कहीं ना कहीं जो आपका प्लान किए गए हैं अदर्स, या टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन लीडर्स और मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, एंड द ओवरऑल आपका एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है. एंड देन फाइनल वन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज बेसिकली लिंक विद योर प्लान, ठीक है. योर डिग्री ऑफ कंट्रोल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान इटसेल्फ, ठीक है. तो प्लानिंग में आपका जैसे लेट्स से वी आर प्लानिंग टू सेल 10 लाख मार्कर इन अ ईयर, ठीक है. तो हमारा जो गोल था कि हम लोग 10 लाख मार्कर आपका मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल करेंगे, ठीक है. तो दिस इज आवर बिगर गोल. सपोज दैट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये 10 लाख मार्कर आपके कैसे होंगे, हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर व्हाट, एंड व्हाट काइंड ऑफ लेबर क्लास विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, और पीपल विल रिक्वायर्ड, ठीक है. देन आपका जो मैनुअल्स या जो चार्ट हमारे हैं, या कहीं ना कहीं जो भी हमने प्रोसेस डिसाइड किए गए उसमें एग्जैक्टनेस, एंड कंट्रोलिंग इज बेसिकली चेकिंग दोज पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. चेकिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हमने क्या प्लान किया था और एक्चुअल में क्या हुआ, एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंसेस, और दैट इज आल्सो नोन एज वेरिएंसेस. सो basically making a root cause analysis based on that particular variance. So that is the final step, ठीक है. तो
एक बार थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है. देन आई विल कम टू द क्वेश्चन पार्ट आल्सो. सो प्लानिंग, इफ यू टॉक अबाउट द प्लानिंग, सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, ठीक है, प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट, ठीक है. इट इज कंप्लीटली मेंटल प्रोसेस to determine the course of action and achieve the desired result, ठीक है. जैसे हमने 10 लाख का आपका टारगेट रखा, so that is our target, ठीक है. So to achieve that particular one, making a proper blueprint, deciding our manuals, course of action in others, so that is generally part of planning, ठीक है. Planning in an organization, they generally happen at different level, like जैसे top management we have strategic planning, ठीक है. So let's say if we are introducing a new product, so that introduction is part of this. The top management means board of directors, ठीक है. Then we have middle management, ठीक है. So they'll make tactical plans, means kind of कि जैसे उन्होंने बोला कि हम नया मार्कर लॉन्च कर रहे हैं एंड दिस इज द टारगेट इन ऑल एंड दिस विल बी द फीचर, सो हाउ टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन ऑल, ठीक है. कैसे जो चीजें उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करना टॉप मैनेजमेंट के, ठीक है. लोअर लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स दे वर्क ऑन ग्राउंड लेवल, ठीक है. जो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल एग्जैक्ट आपके जो पॉलिसी प्रोसेसेस आपके सेट किए गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के दौरान, उनमें आपका एग्जैक्टनेस लाने में हेल्प करेंगे. सो दैट इज द वन. सेकेंड वन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, it is all about like kind of distribution of resources और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. ये सारी चीजें जो आपको कहाँ पे मिलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मिलेंगे. जैसे आपका डिटरमाइनिंग टारगेट्स, आपका एक्शंस, आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, formation of organizational chart and manuals and organizational actions. So they are generally part of this particular process. Okay? So organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing reporting and relationship, and allocation resources required to carry out a specific plan, which we have decided in the first stage itself, right? So organizing is all about the dividing that bigger goal among the smaller one through MBO things, management by objectives, overall allocation of resources, as well as the responsibility like kind of आपका distribution of role and responsibilities as well. That is generally part of this one. ठीक है. The next step is staffing. ठीक है. Staffing is all about selecting right person at right job. ठीक है. So to perform those particular tasks and all will require people, and selecting right person for right job is very necessary. ठीक है. तो अगर आप सही पर्सन को सही जगह पर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. अगर आप ओवर क्वालिफाइड या अंडर क्वालिफाइड को लेके आएंगे, तो दोनों तरफ से वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है. सो as per the job requirements, so we have to select people, right? So staffing simply means finding the right people for right job. This function management involve activities such as recruitment, selection, placement, training of personnel and all. So these are the key areas, ठीक है, जो आपका इस पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगे. The next one is directing. ठीक है. Directing which is directly lead with your लीडर्स और योर मैनेजर्स. ठीक है. तो जहाँ पे आपका लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, conflict, and all these are the areas of study which are generally part of this particular function. ठीक है. So directing is telling people what to do and seeing they do it to their best of ability. It involves leading, influencing, motivating employee to perform the task assigned to them, right? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं this is more toward the leadership job. ठीक है. तो आपका कहीं ना कहीं that depend on the organizational complexities as well as organizational size. ठीक है. तो उसके हिसाब से the maturity level of the subordinates or the experiences of the leaders and managers, तो उसके हिसाब से हम लोग आपका डायरेक्शन दे रहे होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे आपका मोटिवेशन को, आपका लीडरशिप को, ठीक है, आपका बिहेवियर आपका है मोरल से, या फिर जो अदर एरियाज आपके होते हैं, ठीक है, जैसे परसेप्शन है या अदर्स, दे आर जनरली सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. द फाइनल वन इज कंट्रोलिंग. ठीक है.
अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। योर प्लान विल डिसाइड योर डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्यों ऐसा? जैसे हमने बोला कि विद इन 6 मंथ वी विल सेल 10 लाख मार्कर्स, ठीक है, और वी विल प्रोड्यूस 10 लाख मार्कर एंड विल सेल देम इन द मार्केट। तो अब 10 लाख इज आर फाउंडेशन, ठीक है। उसका फर्दर डिवीजन हमने किया, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो इस तरीके से हम 10 लाख मार्कर बेचेंगे, वो हमने पूरा प्लान दिया। तो नाउ वी हैव द एरियाज कि दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग और दिस डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, सो वी विल एबल टू अचीव दोज पर्टिकुलर टारगेट। तो वो आपका जो आपने वहां पे प्लान किया या ऑर्गेनाइज किया चीजें, वो कहीं ना कहीं उनमें एग्जैक्टनेस है या नहीं है, दैट वी जनरली अचीव थ्रू दी कंट्रोलिंग थिंग्स, ठीक है। तो वो हम लोग आपका कंट्रोलिंग से अचीव करे होते हैं। So controlling is the management function of monitoring organizational performances toward the attainment of organizational goal. It involves establishing standard of performance, measuring actual performance, comparing it with the standard and taking corrective actions where any significant deviation is found. Okay, so basically it is a comparing it is in comparison with between actual versus expected, ठीक है। तो हमने जो estimated किया था वो और actual, if there is any deviances, if there is any deviation or variances, so find out the root cause analysis and find out who is responsible for what, ठीक है। तो आपका जो रिवॉर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी है वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ से आपका लिंक होगा, ठीक है। तो गाइस लाइक इन व्हेन लाइक जैसे हम लोग आपका वन बाय वन इन सभी सेशंस को आपका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। So in the near future, when will come, we will discuss all these 5 functions in detail also, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका the entire management subject is around surrounding these 5 areas, ठीक है। तो पूरा अगर आप मैनेजमेंट का बुक पढ़ते हैं या if you study management in MBA or other things, ठीक है, so you'll see the entire course curriculum is generally based on these particular 5 areas, ठीक है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिनका एक ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पे दिया है। नाउ लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो बेसिक आपका एक रेफरेंसेस, एक क्विक टेस्ट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is primarily concerned with arranging resources and tasks to achieve organizational goal. Arranging resources and tasks. So what will be our correct answer for this one? Organizing function will be right answer for this particular one, because organizing is all about allocation of resources and people, who will responsible for what kind of things. The process of setting organizational goal and determining how best to achieve them is known as, so setting organizational goal is part of planning process, okay? So what will be your correct answer for this one? Planning will be right answer for this one. Next one, which of the following function is primarily concerned with allocating resources and organizing tasks, okay? Allocating resources and organizing tasks, okay? So which of the following function is primarily concerned with allocating resources and tasks? तो आपका ये कहां पे होता है? अगेन इट इज द केस ऑफ आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट वन आपका, ठीक है, which of the following is the primary goal of controlling function in management, ठीक है, controlling function in management, चलो बताओ। so what will be your correct answer for this particular question? So what will be your correct answer for this one? ठीक है. So controlling a primary goal of controlling function to assess employee performance, to ensure the organization achieve its objectives. This is also part of this, but this is more relevant. ठीक है. To create policies for organization to allocate resources efficiently. ठीक है. So controlling is like this is organizing things. ठीक है. So क्या होगा आपका correct answer? B will be correct answer for this particular question. Okay, next one. Which function of management focus on establishing standard, measuring actual performance and comparing the two determining corrective actions? Okay.
सो दिस इज पार्ट ऑफ विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, स्टेम आपका स्टेबलिशिंग स्टैंडर्ड एंड मैचिंग एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड, ठीक है। तो क्या होगा आपका कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following is a key activity in planning function of management? प्लानिंग फंक्शन आपका जहां पे हम लोग गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। मोटिवेटिंग टीम टू मेंबर आपका ये किस में होगा, आपका लीडिंग वाले पार्ट में रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल वर्क असाइनमेंट आपका दिस इज ऑर्गेनाइजिंग टीम, सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, सुपरवाइजिंग इन दिस, अगेन दिस इज द लीडिंग पार्ट, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन, The management process, which of the following is first step? तो सबसे पहला क्या होता है हमारा प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सॉरी, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। Which of the following is a key activity in controlling function of management? So controlling function of management, the last one or the fifth one, again, setting long term objective, planning, evaluating performance against standard, आपका controlling, ठीक है। Organizing resources, आपका organizing functions, motivating employees, again आपका directing, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन बी will be right answer for this particular question. Understood? Next one. So there are two statements and you have to find out the correct one, ठीक है। So planning is the process of setting objective and determining the course of action to achieve, true. Organizing is primary concern with allocation of resources and to achieve the goal during the planning stage, ठीक है। So what will be your correct answer? Statement 1 and 2 both are true, ठीक है। So option A only will be right answer for this particular statement. तो पहला ही statement आपका correct है। So both the statements are correct about the आपका वो प्लानिंग और इनसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। Organizing is the management function that is primarily concerned with establishing policies, setting goals and develop plan. Organizing involve the distribution of tasks and resources among this, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज primarily concerned with establishing policies, setting goal, this is part of planning function, ये आपका planning का part है, ठीक है। ऑप्शन टू आपका स्टेटमेंट टू, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज, दिस इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट टू। सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लानिंग की बात करें, सो प्लानिंग इज ऑल अबाउट गोल सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है आपका, इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और आपका बेसिकली डिसाइडिंग हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट वन, so again you have to find out the correct statement here. So planning is the first function of management and it is involved deciding in advance what should be done and when and how, ठीक है। so planning के बारे में आपका ये statement, पहला statement, ठीक है। दूसरा आपका controlling is the last function of management, help in ensuring that goals are met by taking corrective actions when performances deviate from the planned objectives, ठीक है। तो management function or process start with planning and it end with controlling, so both the statements are correct, ठीक है। ये भी सही है आपका और ये भी आपका सही है, ठीक है। start end आपका planning is objective setting, what to do, how to do, and आपका controlling is आपका मेकिंग श्योर कि हाँ जो चीजें प्लान की गई हैं या अदर्स प्रोसेस का पार्ट है वो वैसे ही चीजें हुई हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। अंडरस्टूड, कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए। नेक्स्ट वन, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, controlling has management function include measuring performance, comparing it with set objectives and making adjustment as necessary, ठीक है। So controlling as a management function include measuring performance, comparing it with the set objectives and making adjustment as necessary, true, पहला statement, ठीक है। Statement two,
अगर हम लोग बात करते हैं, लीडिंग अ फंक्शन इन्वॉल्व बोथ मोटिवेटिंग द टीम एंड ensuring दैट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, अगेन दिस इज ट्रू। ठीक है, तो क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आपका। ठीक है, अच्छा ओके, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग इन दिस केस, सॉरी, हाँ प्लीज डू करेक्ट दिस वन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, आपका स्टेटमेंट 2 क्या था आपका, लीडिंग फंक्शंस इन्वॉल्व बोथ मोटिवेटिंग, मोटिवेशन इज पार्ट ऑफ लीडिंग, ठीक है, इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड प्रोसीजर्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, इट शुड बी ट्रू आपका। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आपका आंसर इसका ए होना चाहिए। ठीक है, नॉट दिस, प्लीज डू करेक्ट दिस वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस, ओके दिस इज इट। ठीक है, सो दीज वर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, तो काइंड ऑफ अ समरी वी गॉट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, एंड एवरी सैटरडे आई विल कम अप विद अ टॉपिक, जहां पे उस टॉपिक का और उसके सराउंडिंग जो चीजें हैं उनको हम लोग आपका समझेंगे। ठीक है, एंड सी गाइस, अभी से अगर आप 2025 की आप तैयारी करेंगे, देयर आर नंबर ऑफ वैकेंसी, देयर विल बी नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो अब देखो, मैनेजमेंट बहुत सारे एग्जामिनेशंस का पार्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट देखो, इसको पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसका समरी नोट्स बनाएं। ठीक है, देन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे, बिलीव मी यू विल हैव वेरी गुड रिजल्ट। जब आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस करेंगे एग्जामिनेशन में, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला। ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डू इंटरेक्ट इन क्लासेस। ठीक है, जैसे हर समय हमारी क्लासेस होती हैं यहाँ पे अलग अलग डेट्स पे, फाउंडेशन क्लासेस या अदर्स, एंड इफ यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, प्लीज डू शेयर दो चैलेंजेस। ठीक है, टॉपिक्स में आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक हमारे साथ शेयर करो, सो वी विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट्स का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। सो वी विल अरेंज क्लासेस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो आपका देयर इज अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इफ यू हैव सम कंफ्यूजन अबाउट एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, और इवन यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल सी यू वेरी सून विद द न्यू वीडियोस, एंड इसके अलावा बहुत सारे हम लोग वीडियोस करते रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं चैनल पे, उनमें भी पार्टिसिपेट करो। और अगर कोई भी ऐसी एडिशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, नोट्स चाहिए या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो डू कनेक्ट विद अस। ओके, so this is it from my side guys, thank you for joining this session, thank you for watching this session, bye bye, take care all, have a nice